Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering computer awareness for the upcoming CBSE Direct Recruitment Quota Examination 2026. This is part 2 of the video and we'll be covering classification of computers and the related PYQs for this topic. This is a little bit about me. I cleared Tier 1 and Tier 2 of the Assistant Secretary CBSE Assistant Secretary Examination 2024-25 and I had also appeared for the interview, but unfortunately the recruitment was cancelled by CBSE in 2025. Now, classification of computers. So on the basis of size, we basically classify computers into four types. Okay? So the first one is a supercomputer, then we have mainframe computers, then mini computers and the last one microcomputers. ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स में क्या रहता है, दे आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स. दे रिक्वायर लार्ज रूम्स टू ऑपरेट. दे यूज़, देखो इसकी यूजेज क्या कहाँ कहाँ पे है, वेदर फोरकास्टिंग. देखिए वेदर फोरकास्टिंग में देयर इज़ अ नीड ऑफ अ लॉट ऑफ डेटा स्टोरेज इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो दैट इज़ वाई सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. देन वी हैव स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर सिमुलेशन. ठीक है, न्यूक्लियर सिमुलेशन मतलब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको सिमुलेट करके देखेंगे. ओरिजिनली नहीं, मतलब असली में नहीं करेंगे, बट वी विल सिमुलेट इट टू सी व्हाट विल हैपन. ठीक है, देन ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड ये कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स. Next है mainframe computers. They are used for handling and processing very large amount of data very quickly. ठीक है, so example is big iron computer. They are the backbone for the entire business world. ठीक है, this is very important. Business world में primarily mainframe computers are used. Next, mini computers. They are basically used by multi-users. They are used in laboratories and they are smaller in physical size. ठीक है, laboratories में primarily they are used. Then microcomputers are the ones which we use. ठीक है, single users रहते हैं इसके. They are small in size and they are used at your workplace, school, home, etc. So microcomputers have the least processing as well as storage capacity. ठीक है. Now we'll classify the computers based on data handling. ठीक है, तो based on data handling there are three types of computers. The first one is analog computer, the second one is digital computers and the third one is hybrid models. ठीक है, so first of all we look at the analog computers. Analog computers are utilized primarily to measure physical units like the voltage, electric current, pressure, temperature and convert them into digits. ठीक है, तो a very common example is our speedometer. कार्स या व्हीकल्स में आपने देखा होगा स्पीड डिनोट करता है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, दे हैव कंटिन्यूस वैल्यूज, दे हैव वेरी स्मॉल मेमोरी, स्लो स्पीड, the results are not very accurate and they are a bit difficult to use. ठीक है, then we have digital computers. Digital computers process the data in numeric as well as data forms. So it can perform arithmetic operations such as addition, occurrence, subtraction, multiplication or division and all type of logical operations. जो भी mathematical operations होते हैं ना, they can be done by digital computers. So the characteristics are discrete values, faster speed, large memory and very reliable. Therefore they are usually 100% accurate. ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड देन दे कैन से कि एनालॉग कंप्यूटर्स गिव आंसर्स इन डिस्क्रीट वैल्यूज, सो दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो फिर से वील जस्ट लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स वंस मोर. कंटिन्यूस वैल्यूज होते हैं एनालॉग कंप्यूटर में, स्मॉल मेमोरी होता है, very slow speed, the results are not very accurate and it is a bit difficult to use. Whereas for digital computers they have discrete values, so it is not continuous, rather it is discrete. Then it has a faster speed,
larger memory, and they are very reliable, so nearly 100% accurate. Now the third type of computer is a hybrid computer. ठीक है, so it is a computer that has characteristics of both analog computers as well as digital computers. ठीक है. Now we'll go for classification of computers according to their purposes. So the first type of computer is a general purpose computer, and the second one is a special purpose computer. So as the name suggests, the general purpose computers are basically designed to perform more than one task. Okay, so examples of these are our normal personal computers, laptops, notebooks, even our mobile phones for that matter. Now, these special purpose computers, they are designed to perform a single specific task. ठीक है, so an example of that could be modern washing machines, self-driven cars, billing machines. ठीक है, जो point of sales billing machines होती हैं वो सब. ठीक है, all of these are special purpose computers. So now we look at the previous year questions. So let me tell you, देखिए जो असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह के या जो भी सीबीएसई के रिक्रूटमेंट है उनके ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है नहीं, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन took place for the first time in, as far as I know, it took place for the first time in 2024 only. ठीक है. However, CBSE itself conducts various other examinations as well. तो जो KVS का एग्जामिनेशन है, एनबीएस एग्जामिनेशन है, ईएमआरएस है, ठीक है, ये सारी जो टीचिंग पोस्ट्स के लिए एग्जामिनेशंस है ना, दीज आर कंडक्टेड बाय सीबीएसई. एंड इफ यू लुक एट द पैटर्न, पेपर पैटर्न, दे आर द सेम पैटर्न एज द वन विच वी हैव गॉटन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन. ठीक है, तो इसमें भी वही होता है, जनरल अवेयरनेस पे रहेगा, देन एक हिंदी इंग्लिश में रहेगा, देन लॉजिकल रीजनिंग पे रहेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी पे रहेगा, और कंप्यूटर अवेयरनेस पे रहेगा. Exactly same pattern is followed here, and I had analyzed the questions of these exams as well, and they are very similar to the ones which have been asked in the CBSE recruitment examination. So therefore, since ये same body ही बना रही है उन दोनों चीज़ों के paper, that is why I have taken up the PYQs of these examinations for studying. ठीक है, so let us go to the previous year questions. ये KVS का है, एक 2018 का है. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टडीड अबाउट दिस. इसका आंसर रहेगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट जनरेशन क्या रहता है? वैक्यूम ट्यूब्स. ठीक है, सेकेंड जनरेशन में रहता है transistors. Then third generation integrated circuits, fourth generation microprocessors. ठीक है, एंड फिफ्थ जनरेशन क्या है लास्ट वाला? AI एंड ULSI. ठीक है, बस यही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, integrated circuit chips which are used in computers are made of which metal? तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, सिलिकॉन के बने होते हैं. ठीक है, and this was asked in NVS examination 2025. IC chips are made of silicon, which is a semiconductor material, and silicon is widely used in microchips and integrated circuits because it conducts electricity under controlled conditions. ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following statements about analog computers is incorrect? They are used to process continuously changing data. हमें इनकरेक्ट पूछा है ना, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, दे आर यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन दे कैन स्टोर डेटा. दिस इज रॉन्ग. दे हैव लिमिटेड मेमोरी. दिस इज करेक्ट. ठीक है, जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, दे आर इंस्टेंटेनियसली डिस्प्लेइंग द डेटा. इंस्टेंटेनियस डिस्प्ले रहता है उनमें. जैसे आपने देखा होगा कार्स में जो स्पीडोमीटर रहता है, उसमें जो अभी स्पीड है वो दिखाता है. ठीक है, पुरानी स्पीड्स को नहीं दिखाता है. Therefore, it does not store any data. So, analog computers process continuous physical quantities such as temperature, pressure, voltage, etc. They do not store data. Examples include speedometers, mercury thermometers, etc. ठीक है,
So the answer for this will be option B. Next question, desktop and tablet belong to which type of computers? So this is again very simple question. The answer is microcomputers. We just read it above, है ना? So desktop and tablet computers are types of microcomputers, and a microcomputer is designed for a single user at a time. ठीक है, and four types क्या है? Microcomputer, mini computer, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स. ठीक है, इनका क्या क्या एप्लीकेशन क्या था? मिनी कंप्यूटर्स को मल्टी यूजर्स कैन यूज एट अ टाइम. ठीक है, एंड दीज वर यूज इन लेबोरेटरीज एट्सेट्रा. कोई भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह में दीज आर यूज्ड. देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, दीज आर यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड प्राइमरली. ठीक है, और लास्ट सुपर कंप्यूटर वॉज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक यूजेजेस लाइक न्यूक्लियर सिमुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये है इसका. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिनी कंप्यूटर्स इज इनकरेक्ट? So mini computers are smaller than microcomputers. So this is a correct statement. Sorry, this is an incorrect statement. Microcomputers are the smallest computers. ठीक है, तो ये रहेगा आंसर. नेक्स्ट क्या है वैसे? मिनी कंप्यूटर्स आर मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम्स. दिस इज करेक्ट. Then mini computers are medium sized computers. This is also correct. Mini computers have less storage and speed than mainframe and supercomputers. Again correct statement. ये कुछ भी है. ठीक है. So the answer for this will be, since we have to find the incorrect one, the answer will be option A. ठीक है. Next question. Again NPS का है ये. Which of the following types of computers is mostly used in homes? So the answer is microcomputers. Again simple question है बिल्कुल. ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स क्या हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, पीसी जो होता है हमारा, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एट्सेट्रा. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स स्टार्टेड इन द 1970s विद द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स इन सीपीयूज. ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट स्मार्टफोन IBM Simon released? So the answer for this is 1994. In 1994, IBM Simon, the first smartphone, was announced in 1992. It was launched in 1994 and ठीक है, शोकेस भी 1992 में किया था. इसको लर्न करने के लिए कैसे लर्न कर सकते हैं? साइमन हमने हमने उसमें पढ़ा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, साइमन पार्टी गो बैक. ठीक है, साइमन कमीशन आया था ना, उससे लर्न कर सकते हैं. साइमन कमीशन स्मार्टफोन. देखिए, ठीक है, साइमन कमीशन वाज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, है ना, याद है आपको? इन दिस वाज एन ऑल वाइट कमीशन विच वाज एम्ड एट चेकिंग वेदर द 1935 का एक्ट वाज गुड और नॉट. नहीं, 1920 वाला. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, है ना. तो सिंस साइमन कमीशन वाज नॉट गुड फॉर इंडिया, सिमिलरली स्मार्टफोन्स आर नॉट गुड फॉर पीपल, ह्यूमन बींग्स. मतलब एक्सेसिव स्मार्टफोन यूजेज इज नॉट गुड फॉर ह्यूमंस. तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं. ठीक है, कि साइमन IBM साइमन वाज द फर्स्ट स्मार्टफोन विच वाज रिलीज. ये ऐसी ट्रिक है, ऐसे ही मैंने आपको लर्न करने के लिए बताया है ये सब, सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर दिस फैक्ट. ईयर क्या है? 1994. ठीक है, नेक्स्ट है, Dash is the first supercomputer developed in India. So the answer for this is Param. ठीक है, तो परम का मतलब ही क्या होता है? दिस इज़ अ हिंदी वर्ड फॉर फर्स्ट, है ना. फर्स्ट या वन को बोलते हैं हिंदी में परम. ठीक है, सो इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज परम 8000. इट वॉज डेवलप्ड इन 1991 बाय CDAC. CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. दिस इज इन पुणे. ठीक है, एंड परम स्टैंड्स फॉर पैरेलल मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, विजय P. भाटकर
is known as the father of India's supercomputing program. ठीक है, तो विजय इस लर्न कैसे करेंगे, हाउ विल वी लर्न हिज नेम? तो विजय पी भाटकर was वो he was successful, he was सक्सेसफुल का मतलब क्या रहता है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम उसको? विजय. सो विजय पी भाटकर was successful in developing India's first supercomputer. ठीक है, India's first supercomputer. ऐसे ही लर्न करना कि विजय पी भाटकर was विजय या successful in developing India's first supercomputer Param, that is parallel machine. नेक्स्ट है weather forecasting, oil and gas exploration require large scale computation. Which type of computer is ideal for such tasks? So again the answer for this will be supercomputer. ठीक है, simple question, we have done this earlier as well. Supercomputers have extremely high processing powers and massive memory. They are used in scientific research, petroleum exploration, वेदर फोरकास्टिंग, सिमुलेशंस एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. ठीक है, ये एनबीएस में पूछा था 2022 में. नेक्स्ट है दे हैड गिवन अ पैसेज एंड ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन था. सो आई हैव नॉट गिवन द पैसेज सिंस इट कैन बी डन विदाउट इट एज वेल. ठीक है, तो ऐसे क्या है, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. So supercomputers are designed to solve complex problems. This is correct. Supercomputers are very large machines. This is also correct. Supercomputers generate huge output data. Again correct. Then supercomputers are inexpensive. तो ये गलत है. They are very expensive. ठीक है. Next है for performing complex execution at extremely high speeds, which type of computer is normally used? So the answer for this is again supercomputers. Simple question है. Supercomputers are used to develop to perform complex execution at extremely high speeds. The world's first supercomputer was Cray 1, ठीक है, which was developed by Cray Research Company in the year 1976. तो इसको लर्न कर के लिए क्रेयॉन को हम लर्न कर सकते हैं. क्रेयॉन्स जिससे हम कलरिंग करते हैं ना, उसको क्रेयॉन बोल रही हूँ. So that is how you learn that the world's first supercomputer was Cray 1. Then this type of computer was multiprocessing and parallel, uses multiprocessing as well as parallel processing techniques. As of November 2025, the world's fastest supercomputer in the world is El Capitan of USA. ठीक है, November 2025 तक ये this was the fastest supercomputer in the world. So you need to remember this. This is important. ठीक है, El Capitan from USA is the world's fastest supercomputer. Then India का fastest supercomputer क्या है? Airawat PSAI. This has been developed by CDSE Pune. ठीक है, even Param was developed by CDSE Pune. तो क्या है इनका? Airawat PSAI. This is India's fastest supercomputer. ठीक है, पायनियर फर्स्ट कंप्यूटर सुपरकम्प्यूटर वाज Cray 1. ठीक है, एंड दे वर्क ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक्स, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग. ठीक है, दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम KVS. So that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to my YouTube channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.